Good evening to all of you. Myself Nitin Chaudhary, nursing tutor, Index Nursing College, Indore MP. Today my topic discuss ethics in nursing. आज हम ethics के बारे में जानेंगे. टॉपिक विहार नीति शास्त्र. Ethics introduction. Ethics is the study of good conduct, correct characters, character and motive. It is concerned with determining what is good and valuable for all peoples. Ethical issue differ from legal issue. Content of the law and determined by systems of government law are enforced by the same systems. Breaking the law usually result in public conscience. The law guides public behavior that will affect others and that will preserve community. Ethics has a broader broader basis of interest and includes personal behavior and issue of characters such as kindness, tolerance and generosity. Definition. Uh, a code of ethics is a formal statement of groups, ideas and value. क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं इसमें एथिकल में. मतलब एक जो ग्रुप बना होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टेटमेंट. देन वैल्यू एंड मॉरल्स. A value is a personal belief about the worth you hold for an idea, a custom or an subject. The values reflect your cultural and social influence. For example, if you live in rules place, you may value the environment differently from someone who visit rural area from a short time. And morals usually refer to judgment about behavior, and ethics is the study of ideas of rights and wrong behavior. Purpose. Standard for the behavior मतलब ऑफ नर्सिंग एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग एक्शंस. मतलब क्या क्या उसकी प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन होते हैं नर्सिंग के, वो गाइड करनी होती है अपने को. और एक्शन जो आगे किसी चीज़ पे एक्शन लेना होता है तो वो स्टैंडर्ड मतलब टॉपिक सी डी बाय सी डी, मतलब एक टॉपिक के टॉपिक बाय लेना पड़ता है. एंड बिहेवियर देन हेल्प टू डिस्गाइज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. क्या क्या राइट हो सकते हैं, क्या क्या रॉन्ग हो सकते हैं, क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या गलत हो सकता है. इनेबल ए करेक्ट डिसीजंस. मतलब सारे ग्रुप का और एक पर्सन जो होता है ना, जो हेड, वो क्या क्या करेक्ट हो सकता है और डिसीज़न लेना पड़ता है. मतलब करेक्ट सही डिसीज़न सभी ग्रुप वाले को मिल के. प्रोटेक्टिव देन राइट ऑफ इंडिविजुअल. देन यूज़. क्या क्या यूज़ हो सकते हैं. एक knowledges the rightful place of individual in health care delivery systems, contributes toward empowerment of individual to become responsible for their health and well-being. Then contributes to quality care. क्या क्या क्वालिटी हो सकती है केयर पेशेंट की और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है. आइडेंटिफिकेशन. देन आइडेंटिफिकेशंस ऑब्लिगेशंस इन practice, research and relationship. Then information the individuals, families, communities and other professionals about expectations of a nurse.
एथिकल्स प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल है इसके एथिकल्स के, तो ऑटोमेटी ऑटोनोमी सॉरी ऑटोनोमी, इंडिपेंडेंस मतलब खुद के ऊपर सेल्फ, मतलब खुद अपने आप पैरों पे खड़े होना, मतलब ऑटोमेटिकली, और इंडिपेंडेंट खुद सेल्फ है ना अपने, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, फेयरनेस और इक्वाइट, देन fidelity, faithfulness, striving to keep promise, beneficence, actively seeking benefits, promotion of good, non-mal finances, actively seeking to do no harm. Then dilemma ethical dilemma occur when there is conflict between two or more ethical principles. No correct decision exist. Ethical reasons. Then introduction. uh, Indian Nursing Counseling (INC). Indian Nursing Counseling has published the Code of Ethics for Nurses in India in year 2006 2006 में ये गाइडलाइन INC के द्वारा मतलब इंडिया में आई थी. द कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सिंग इन क्राइटेरिकल्स फॉर बिल्डिंग्स प्रोफेशनल प्रोफेशनल professionalism and continuity. Ethical considerations are vital in any area dealing with human being, including nursing research, because they represent value, right, and relationships. The Code of Ethical for Nurses in India 2006 are as follows. The nurses respect the unqualifiedness of an individual in provision of care. Nurses क्या क्या केयर हो सकते हैं? प्रोवाइडेड केयर ऑफ इन provides care of individuals without considerations of caste, creed, religion, culture, ethnicity, and gender, socio-economic and political status, personal attributes, or any other grounds. Individualize the care considering the belief, value, and culture sensitivities, develops and promotes trustful relationship with individuals, recognizing uniqueness of response of individuals to interventions and adapt accordingly. Then the nurse respect the right of individual as partners in care and help in making informed choice. Nurses appropriates individual rights to make decisions about the care. क्या क्या rights हो सकते हैं? individuals rights make and decision लेना पड़ता है. Therefore give advocate and accurate information for enabling them to make informed choice. Respect the decisions made by individuals regarding their care. Protect public from misinformations and misinterpretations. Advocates special provision to protective vulnerable individuals group. The nurses respect individuals' right to privacy, maintains confidentiality, and share information judiciously. Judiciously. Nurses respect the individual's rights to privacy of their personal information, maintains confidentiality of privileged information expected in life-threatening situations, and use described in sharing information
take informed consent and maintain um, anonymity anonymity when information is required from quality assurance, academic legal reasons, limits the access access the access to all personal records, rights, and computerized to authorities persons only. Then nurses maintains complications in order to order क्वालिटी नर्सिंग केयर. क्या क्या क्वालिटी हो सकती है नर्सिंग केयर में? तो नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड नर्सिंग नर्स. एक जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. नर्स स्ट्राइव टू मेंटेन क्वालिटी नर्सिंग केयर. क्या क्या क्वालिटी, वो क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए. एंड अपहोल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. सही तरीके से केयर करना चाहिए. अपहोल्ड द स्टैंडर्ड केयर मतलब अच्छी तरह से आना चाहिए. नर्सिंग वैल्यू कंटिन्यूज एजुकेशंस इन इनिटियंट्स एंड यूटिलाइज ऑल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट्स. खुद के ऊपर अपॉर्चुनिटी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए अपना खुद का. नर्सेस वैल्यू रिसर्च एज ए मीन्स ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशंस. अपना जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नर्सिंग प्रोफेशन की तरह होना चाहिए. एक जो आम एक इंसान होता है. पार्टिसिपेट्स इन नर्सिंग रिसर्च अथराइज्ड टू इथिकल प्रिंसिपल्स. क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या डेवलप होता है एक नॉन मेडिकल पर्सन एंड मेडिकल पर्सन में प्रोफेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए सारी याद. देन द नर्स इज obligated to practice within the framework of ethical, professional, and legal boundaries. Nurses addresses to Code of Ethics and Code of Professional Conduct for Nurses in India, developed by Indian Nursing Council. Family familiarized with relevant law and practice in accordance with the law of the state. Then the sixth, the nurse is obligated to work harmoniously with members of the health team. Nurses appreciated the team effort in रेंडरिंग केयर. मतलब सारी जो टीम होती है वो अपना एफर्ट्स देना चाहिए, मतलब कि अपना काम अच्छे से और सही तरीके से वो करना चाहिए. रेंडिंग केयर. देन कोऑर्डिनेट्स एंड collaborates with members of the health team to meet the needs of peoples. कोऑपरेट्स करना चाहिए, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विथ मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम. सारी टीम मतलब कोऑपरेट करके चलना चाहिए एक टीम लीडर को. 7. The nurses committee to reciprocate the trust invested in nursing profession by the society. Nurses demonstrates professional etiquette in all dealings. Demonstrates professional attributes in all dealings. Then International Code of Nursing Ethics, the ICN Codes of Ethics for Nurses, and International Codes of Ethicals for Nurses was first adopted by the International Council of Nurses, ICNs, International Council of Nurses, in 1953. It has been received and refinement at various times since, most recently with this review and revision completed in 2005. Primarily, nurses have for fundamentals responsibility to promoted health. Nurses have for fundamental responsibility to promote health, to prevent illness,
to restore health and to elevate it, surfacing the need for nursing in universals. Inherent in nursing is respect for human rights, including culture rights to the rights to life and choice, to dignity and to be treated with respect. Nurse care is practically of and understated by consultations of age, colors, creed, culture, disability or illness, gender, sexual orientations, nationality, politics, races or social status. Nurses render health service to the individuals, the family and the community, and coordinated their service with those of related groups. Then the ICN code, क्या क्या कोड्स हो सकते हैं? द ICN कोड, इंटरनेशनल काउंसलिंग नर्सेस of ethicals for nurses has four principles elements that outline the standard of ethical conduct. Elements of the codes: nurses and people. The nurse's primary professional responsibility is to peoples requiring nursing care. In providing care, the nurses promotes an environment in which the human rights, value, customs, and spiritual life of the individual, family, and community are respected. The nurses ensures that the individual receiving sufficient information on which to basis consent for care and related treatments. The nurses hold in confidence personal information and uses judgment in share this information. The nurses share with society the responsibility for initiating and supporting actions to meet the health and social need of the public, is particular those of vulnerable populations. The nurses also share responsibility to sustain and protect the natural environments from depletions, populations, degradations, and destructions. Then nurses and practice. The nurses' careers, personal responsibility, and accountability for nursing practice and for maintaining competence by the continuous learning. The nurses maintains a standard of personal health such that the ability to provide care is not compromised. The nurses use judgment regarding individual competence with when accepting and delegating report responsibility. The nurses at all time maintains standard of personal conduct which reflect will on the professions and enhance public confidence. The nurses in providing care insurance that use of technology and scientific advance are compatibility with a safety, dignity and right of peoples. क्या क्या राइट सेफ्टी उस नर्सिंग की प्रोवाइड केयर करना चाहिए, इंश्योरेंस दैट इंश्योरेंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एडवांस आर कंपेबिलिटी विथ द सेफ्टी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने राइट्स देन पीपल के राइट्स ईमानदार होने चाहिए. नर्सिंग एंड प्रैक्टिस. देन नर्सेस एंड द प्रोफेशंस. क्या क्या प्रोफेशन? तो द नर्सेस assumes the major role in determining and implementing acceptable standard of clinical nursing practice, management, research and education. The nurses in active in developing a core of research based professional knowledge
The nurses acting through the professional organizations uh, participates in correcting and maintain safe, equitable, social and economical working condition in nursing. क्या क्या इस नर्सिंग के प्रोफेशन होना चाहिए, तो मेजर होना चाहिए, मतलब रोल होना चाहिए, मेजर रोल किसी भी टीम में, डिटरमाइंड एंड द इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्लिनिक नर्सिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट के बारे में याद होना चाहिए, रिसर्च एंड एजुकेशन बारे में पता होना चाहिए, द नर्सिंग एक्टिविटी एंड डेवलपिंग होनी चाहिए, एक कोर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग तरह से नॉलेज हर वार्ड का होना चाहिए अपने को। द नर्सिंग एक्टिंग्स थ्रो द प्रोफेशनल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट, मतलब बड़े बड़े जहाँ भी अपने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर क्लासेस, हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेंटेन सेफ एंड इक्वली सोशल इकोनॉमिक वर्किंग जो भी कंडीशन होता है वो नर्सिंग सब अपने प्रोफेशनल पार्टिसिपेट में जाना चाहिए। तो ये अपना प्रोफेशन हो गया। देन नर्सेस एंड कोवर्कर्स, नर्स एंड कोवर्कर में क्या क्या वो होना चाहिए कॉम्बिनेशन, और क्या क्या रिलेशनशिप होना चाहिए अपना। तो द नर्सेस सस्टेंस ए को ऑपरेटिव relationship with co-worker in nursing and other field. The nurses take appropriate action to safeguard individual individual families and communities when their health is integrated by a co-worker और many other persons। मतलब नर्स असिस्टेंस और कोऑपरेशन रिलेशनशिप होना चाहिए एक वर्कर और एक नर्स स्टाफ में, जो फील्ड में अपने साथ रहते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बिहेवियर होना चाहिए। द नर्स टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन सरपेट इंडिविजुअल फैमिली टाइप होनी चाहिए, अपनी कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ग्रुप बना होना चाहिए। देन नर्सेस एंड सोसाइटी, सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए, तो सोसाइटी में नर्सिंग बिहेवियर क्या क्या होना चाहिए, participate and share responsibility with other citizen and other health professional, and recognizing and perform the duties of citizenship, aware of law and regulations which affect the practice of medicine and nursing. Then thank you, my topic is closed.